Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students and viewers. Today we are going to discuss the Educational Assessment and Evaluation course code 8602 for B.Ed program for Allama Iqbal Open University, Islamabad. We are discussing about the unit number 3, types of assessment, tests and techniques. There are many different ways of collection information depending on what you are teaching and what kind of information teacher need. Classroom assessment tests and techniques help to assess the degree to which your students understand the course content and they can provide information about the effectiveness of teaching learning process. हमारे पास बहुत से वेज़ होते हैं एज अ टीचर कि हम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस वजह से उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टेस्ट लेने के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का टेस्ट चूज़ करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज टॉपिक आर, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, prospective teachers will able to understand the describe the different types of tests and techniques. Examine the purposes and characteristics of tests and techniques. Describe the role of tests and techniques for improving the teaching learning process. Analyze the advantages and disadvantages of each type of test and technique. There are 7 main types of tests, and these are as given under: achievement test, aptitude test, attitude test, intelligence test, personality test, norm reference test, and criterion reference tests. Achievement test. Achievement tests are widely used throughout education as a method of assessing and comparing student performance. It is developed to measure skills and knowledge learned in a given grade level, usually through planned instruction, such as training or classroom instruction. Achievement test scores are often used in an educational system to determine what level of instruction for which a student is prepared. Teachers evaluate students by observing them in the classroom, evaluating their day-to-day classwork, grading their homeworks, assignments, and administrating unit tests. अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट हैं जो एक क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करके उनके क्लास का डे टू डे वर्क जो है उसको असेस करके, स्टूडेंट्स की क्लास में परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी होमवर्क्स को देखते हुए, उनके असाइनमेंट्स को देखते हुए एडमिनिस्टर करते हैं कि वो किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक जो है उनकी अप्रोच हो चुकी है. तो अचीवमेंट टेस्ट जो हैं बेसिकली ये टीचर्स जो हैं ये अपने क्लासरूम में डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं. ओवरऑल अचीवमेंट टेस्ट सर्व फॉलोइंग पर्पसेस: assess level of competence, diagnose strength and weaknesses. एक स्टूडेंट की कंपिटेंसी को देखने के लिए कि वो कितना कॉम्पिटेंट हो चुका है, हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं. और जब हमने स्टूडेंट की वीकनेसेस को और उसकी स्ट्रेंथ्स को देखना हो, डायग्नोज करना हो, तो भी हम अचीवमेंट टेस्ट को यूज़ करते हैं. असाइन ग्रेड्स. अचीवमेंट टेस्ट लेने के बाद स्टूडेंट्स को ग्रेड भी असाइन किए जाते हैं. अचीव सर्टिफिकेशन और प्रमोशन. अगर हमने नई क्लास में नए ग्रेड में उसको प्रमोट करना है तब भी हम जो टेस्ट लेंगे वो अचीवमेंट टेस्ट होगा. एडवांस्ड प्लेसमेंट कॉलेज क्रेडिट एग्ज़ाम्स एंड करिकुलम इवैल्यूएशन
accountability, information purposes. Types of achievement tests. There are two main types of achievement tests. The first one is formative evaluation and the second is summative evaluation. Formative evaluation, it occurs constantly with learning so that teachers can evaluate the effectiveness of teaching methods along with the assessment of student abilities. फॉर्मेटिव असेसमेंट में ना सिर्फ हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं बल्कि हम एज अ टीचर पूरे टीचिंग प्रोसेस को देखते हैं और टीचिंग मेथड्स को देखते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिवली चल रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्या एबिलिटीज़ हो चुकी हैं, वो किस काबिल हो चुके हैं एंड उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी हमें डायग्नोस हो जाते हैं. And the summative evaluation testing is done at the end of the instructional unit. जो हमारे पूरे यूनिट के एंड ऑफ द ईयर हम लेते हैं टेस्ट, उसको हम समेटिव इवेलुएशन कहते हैं. द टेस्ट स्कोर इज सीन एज द समेशन ऑफ ऑल नॉलेज लर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूनिट. Aptitude tests determine a person's ability to learn a given set of information. They do not test a person's knowledge of existing information. इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स की एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को जज नहीं किया जाता कि एक पर्सन कितनी नॉलेज रखता है या कितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है, बल्कि उसमें ये देखा जाता है कि इस स्टूडेंट की, इस पर्सन की एबिलिटी कहाँ तक है, एबिलिटी ऑफ लर्निंग कितनी है, ये किस हद तक सीख सकता है. Aptitude and ability tests are designed to assess local reasoning or thinking performance. किसी भी स्टूडेंट की थिंकिंग परफॉर्मेंस को, थिंकिंग एबिलिटी को देखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. They consist of multiple choice questions and are administered under exam conditions. और एप्टीट्यूड टाइप जो टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर MCQs यूज़ किए जाते हैं और इसको जिस तरह दूसरे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उसी तरह से इसको भी कंडक्ट किया जाता है. दे आर स्ट्रिक्टली टाइम्ड और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि इतने टाइम में इस पेपर को, MCQs को जितने भी हैं उनको हमने कवर अप करना है. Test result will be compared to that of a control group so that judgment can be made about your abilities. इसमें जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उनको पहले सिखाया जाता है और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है, जबकि इसमें हम कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और उस कंट्रोल ग्रुप पे हम उस तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं देते और इस तरह से टीचिंग नहीं करवाते जिस तरह से हम दूसरे स्टूडेंट्स दूसरे ग्रुप को करवाते हैं. और फिर दोनों को एप्टीट्यूड एक जो हमारा ग्रुप होता है उनसे एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के बाद हम दोनों को कंपेयर करते हैं. एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट, हमारे पास ये थ्री इसके जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं. एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट जो हैं वो मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं उसमें, और एग्ज़ाम कंडीशंस उस पर लगाई जाती हैं और स्ट्रिक्टली टाइम्ड होते हैं. उनको स्ट्रिक्टनेस होती है कि इस टाइम के अंदर आपने अपना एग्ज़ाम जो है उसको कंप्लीट करना है. एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट जो है वो पेपर और पेंसिल टाइप भी हो सकता है और वो ऑनलाइन भी हो सकता है. एटीट्यूड टेस्ट. Attitude is a posture, action, or disposition of a figure or a status. A complex mental status involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways. There are three components of attitude: cognitive, affective, and behavioral. List of attitudes.
हमारे जो रवैयात होते हैं, हमारे जितने भी रवैये होते हैं, उन पे हम टेस्ट किया जाता है। और इसमें पहले देखा जाएगा कि कौन कौन से एटीट्यूड्स हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस, सीरियसनेस, ऑप्टिमिज्म, इंटरेस्ट, cooperative, happiness, respectful, authority, sincerity, and honest. Now, the next type of test is intelligence test. Intelligence test is often defined as a measure of general mental ability. जब हम किसी की जनरल मेंटल एबिलिटी को जज करना चाहते हैं तो तब हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं। The goal of intelligence test is to obtain an idea of the person's intellectual potential. Test is often defined as a measure of general mental ability. Of the standardized intelligence tests, those developed by David are among those most widely used. इंटेलिजेंस टेस्ट हमें डेवलप्ड जो हैं वो मिल जाते हैं और उनसे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस जो है, उनका जो आईक्यू लेवल है वो किस कौन से स्टेटस पे है। Types of intelligence tests: group intelligence test, individual intelligence test, computerized test, verbal test, non-verbal test. ग्रुप में भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट दे सकते हैं, इंडिविजुअली भी हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस जो है वो कितनी है। कंप्यूटराइज टेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन एंड वर्बली जो है वो अगर हम पेपर पेंसिल के बगैर भी स्टूडेंट से पूछना चाहें तो वर्बली भी ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जा सकता है। और नॉन वर्बल भी हो सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट। A personality test is completed to yield a description of an individual distinct personality traits. Teachers can administer a personality test in class to help your children discover their strengths and developmental needs. पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की जितनी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जितनी भी उसकी पर्सनैलिटी के खूबियां हैं, वो सबको हमें पता चल सके। और अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह की डेवलपमेंटल नीड है तो वो हमें पता चल सके ताकि हम उसको हेल्प आउट कर सकें। A personality test can provide guidance to teachers for selection of teaching strategies. क्योंकि अगर हमें स्टूडेंट्स की नीड्स का, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स का, उनके आईक्यू लेवल का हमें पता होगा तो एज ए टीचर हम अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। Personality test can benefit students by increasing productivity, get along better with the classmates, help students realize their full potential, and help students appreciate other personality types. अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि स्टूडेंट्स अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। There are some types and we are discussing about them. Self-report inventory, strengths and weaknesses of self-report inventories, Likert scale, projective test,
Norm referenced tests and criterion referenced tests. Criterion reference test to determine whether each student had achieved specific skill or concept based on standards. Measure specific skill which make up a designated curriculum. These skills are identified by teachers and curriculum experts. Each individual is compared with the preset standard for acceptable achievement. Achievement क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बेसिकली हम इसमें एज अ टीचर पेपर डेवलप करने से और एडमिनिस्टर करने से पहले एक क्राइटेरिया बनाते हैं. जब हम पेपर डेवलप कर रहे होते हैं तो साथ साथ हम एक क्राइटेरिया भी डेवलप कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उस पेपर को चेक करते हैं, उस पेपर को जो है वो ग्रेडिंग करते हैं उसकी. तो वो एक क्राइटेरिया होता है हमारे पास. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने स्टूडेंट्स का पेपर लिया, उनका टेस्ट लिया और वो इंग्लिश रीडिंग स्किल्स के हवाले से हो या इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के हवाले से हो, तो अगर राइटिंग के हवाले से है तो उसमें हमने क्राइटेरिया देखना है कि हम स्टूडेंट्स की वोकैबलरी को देखेंगे, हम उनकी राइटिंग को देखेंगे, हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और हम स्टूडेंट्स की जो है वो स्पेलिंग को देखेंगे कि वो कितना अच्छा लिख रहे हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं या नहीं हो रही. तो उस सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम पेपर को चेक करेंगे. एंड ऑन द अदर साइड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मीन्स कि हम रैंकिंग करेंगे स्टूडेंट्स की ग्रुप के अंदर बाकी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग. To rank each student with respect to the achievement of other in order to discriminate between high and low achievers. Measures broad skill area sampled from a variety of textbooks, syllabus, and judgments of curriculum experts. Techniques, questionnaire, observation, interview, rating scale. These four techniques we can use to evaluate the students'